वेणुगोपाल जी। Sir, I was very thankful to the Speaker and the Parliamentary Affairs Minister for allowing me on a very, very biggest tragedy as a calling attention on 197. Sir, as per 197, you know the rules of 197. A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a minister to any matter of urgent public importance, and the minister may make a brief statement to ask for time to make a statement at a later hour of date. There is no scope for speaking others basically in call attention. But you allowed everybody to ask questions. From here, this side, Francis George asked questions. Premachandran asked questions. Their side also, one Karnataka member asked a question. Very, very fruitful question. Sir, I am again asking. This is the biggest tragedy. Still now, we are searching, we are digging the mud to search the bodies. You think about their family, sir. Their family, missing family. What was the atmosphere? Sir, honorable member, morning also when this issue came, this is not the first time. The same member told Karnataka government didn't done anything. Can I say politics, sir? One incident happened in Karnataka. Okay. No, Wayanad. एक बात बताइए आप Sir, so Wayanad. Sir, I need to clarify. सदस्य मैं बोलने का बहुत टोका टोकी मत करिए आप। Sir. और आप sir, ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस तरीके I'm not के- politicizing. No. Sir, he mentioned about the honorable member of Parliament from Wayanad last 5 years. Sir, entire Kerala, entire nation proud of Rahul Gandhi be the member of Wayanad Parliament, sir. The way in which the flood situation happened, he came there, he camped there, how much service he has done to the Wayanad family, I don't want to describe. That is why he won this time more than 3,60,000 votes, more than the Prime Minister, sir. More than the majority of the Prime Minister, sir. Okay. Then, sir, sir. उनके विषय में नहीं कहा उन्होंने। You are the speaker of... Yes, sir. एक Sir, मिनट। sir, allow me, sir. You are the speaker of last Lok Sabha also. You know how many times Rahul Gandhi intervened for Wayanad natural calamities. There was a record. I'm challenging that member, sir. There are records. How many letters he has given to the Chief Minister? How many letters he has given to the Government of India? How many times he raised the point? Sir, in this type of situation, entire country expecting a fruitful discussion from the Parliament, highest lawmaking body of this country. The way in which a member tried to sabotage the entire discussion. क्या आप चाहते क्या? Sir, my point is that he has to apologize. Yes. He has to apologize. Sir, the member has to apologize. That should not be in the record, sir. We are not going to politicize. We are appreciating the service of Senator Rahul Gandhi. Appreciate the service of military. Okay, मान्य. We are appreciating service. Okay, member. Okay. मान्य सदस्य एक मिनट मान्य सदस्य एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर 350 350 मुझे कंठस्थ है पॉइंट ऑफ ऑर्डर संविधान, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। 350 ये कहता है सर कि इस हाउस में स्पीकर के अथॉरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिसको स्पीकर ने माइक दिया वही बोलेगा। तेजस्वी सूर्या को आपने माइक दिया, उसके आधार पर बोले। उसके ऊपर यदि वेणुगोपाल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपकी तौहीन है, इस रूल्स की तौहीन है और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। माननीय सदस्यगण, सुबह 9:09 शून्यकाल के अंदर भी मैंने इस विषय को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आग्रह किया, उन्होंने विषय रखा। उसके बाद वेणुगोपाल जी संसदीय कार्य मंत्री जी मिले, उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर कॉल अटेंशन होना चाहिए। सरकार ने कहा कि गंभीर विषय, चिंता का विषय है, इस पर सदन पर चर्चा होनी चाहिए और कॉल अटेंशन मैंने अलाउ किया।
सभी माननीय सदस्यों ने कहा। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो विषय आपने ध्यान में डाला है, उन्होंने कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, सुनो। और जो विषय ऐसा है जो इस सदन की मर्यादाओं के और इस घटना की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, मैंने आपको चेंबर में कहा, अभी इस सदन के पटल पे कह रहा हूं, उससे आपकी चर्चा करके उसको शब्दों को वहां से रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। ईडी मोहम्मद बशीर जी। I don't want to take much of your time. I would say in brief only, sir. ईडी मोहम्मद बशीर जी, प्लीज गंभीर बात पर चर्चा नहीं करना चाहते आप सीरियस नहीं है, आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं।